अमित। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप सो यू ऑल वेल। आई थिंक निर्भया तिवारी, राधे श्याम जी, good morning all of you. So last class we had talked about, I think, population. Today's most important topic, a new topic you can say that. Today I'll explain, we will discuss about the ecosystem. Firstly, Nirbhaya Tiwari and Radhe Shyam and all of you. Last class we are discussing about the ecology and environment, the basic term of ecology and environment. That was just like the concept of environment, type of environment, type of components of environment, problem of environment, concept of environment, biological part, just like biotic or abiotic components. Last class we was discussing, but now today similar of those things. Last class we had talked about, I think, population. Please come. Population, या firstly एक ह्यूमन पर्सन या सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल, सिंगल ऑर्गेनिज्म, आफ्टर सिंगल ऑर्गेनिज्म या combination of different type of organism form population, and after that they form community, after community ecosystem, after ecosystem biome, after biome बायोस्फीयर, दैट्स ऑल। और आज की जो क्लास है वी विल ट्राई दैट कि हम आज कंप्लीट इकोसिस्टम को आप लोगों से डिस्कस कर लें, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, हेटेरोट्रॉप्स, स्ट्रेप्टोट्रॉप्स, इन सब के बारे में, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दिस। और जो लोग लाइव हैं, संतोष गोयल, हाय, हेलो, जो लोग लाइव हैं बी रेडी फॉर दैट। और जो भी है आप लोग के साथ हम नोट्स डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आज की क्लास के बाद आप लोग एक मेंस का क्वेश्चन लास्ट में आज मैं आप लोग को देने वाला हूं, एक मेंस का क्वेश्चन, और उस मेंस के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करें। तो लास्ट में रहेगा मेंस का क्वेश्चन। तो जो लोग लाइव कनेक्ट हैं और आप लोग को मैं रिटर्न कराऊंगा, और आपको विद इन 2 days, सडन नहीं कि आपको ऐसा नहीं कि आपको टुमारो ऑनवर्ड उसको सबमिट करना है, ऐसा नहीं है। आपको विद इन 2 days आपको मैं टाइम देता हूं, और आफ्टर 2 days उसको आपको सबमिशन उसका देना है, ठीक है सर। क्योंकि आप एक बात समझें, आप जिस नाव में बैठे हैं ना, उस नाव के नीचे जो पानी है उसकी कोई डेप्थ नहीं है कि मरियाना उसकी तरह आपको ये लग रहा हो कि सर 11.5 ही जो है डेप्थ है, ऐसा कोई डेप्थ नहीं है। आपको यहां प्रैक्टिस करना है, और एक प्रैक्टिस का टाइम मैंने आपको बताया, ठीक है। दैट्स वाई आपकी क्लास ये होती है, इसी टाइम होती है, बिकॉज जो यूपीएससी सिनेरियो है, यूपीएससी जिसके लिए काम करता है, वो वही टाइम सेम कंडीशन में आप क्लास में बैठे। तो हमारा जो एक ग्रोथ है हमारे ब्रेन की, वो सेट हो गई।
कि हमें इसी टाइम ही पढ़ना है, और यही टाइम हमारा एग्जाम का होगा 9:30 to 11:30। ठीक है सर। तो आप जितना भी स्टूडेंट यहां क्लास में है और जो लोग लाइव मेरे साथ कनेक्ट है, इन सबको एक चीज यहां सेट रखना है कि जो आपके लिए हम काम करा रहे हैं, जो आपके लिए हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो क्या एक्सप्लेनेशन है, कैसे हमें चीजों को ब्रीफ करना है, कैसे हमें चीजों को रिटर्न करना है। ठीक है सर। अभी स्टार्टिंग है हमारी, बिकॉज टुडे इज आवर थर्ड क्लास, थर्ड सेशन। तो अभी स्टार्टिंग है। अभी आप लोग ये फील ना करें कि आज ही सर हमें तो सारी चीजें होंगी, अभी नहीं होंगी, बट आफ्टर सम टाइम विद इन 5 to 7 days हम लोग अपने आप में कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, वी विल you can say that most capable person of मुखर्जी नगर, ये मेरा कमिटमेंट है आप लोग। ठीक है, तो we will try in this class कि इकोसिस्टम को हम कंप्लीट करें। so ready okay, last class we was discussing about single person या individual person organism that had ability to function independently. It can be a plant, animal या microbes, animal. So today I'll explain, we will start the second part, that is population. So write down a new heading, level 2. Write down new heading, that is level 2. Population. Level 2 population. We can say that level of population is what? Group of organism. Population is what? Group of organism. So write down group of organism. Group of organism usually of the same species. Usually of the same species. Usually of the same species. Occupying a defined area. Occupying a defined area during a specific time. During a specific time. Population is what? Where the same kind of species get together. Same kind of species get together, live together. भाई ऐसा तो है नहीं कि हम ह्यूमन प्लस एनिमल उन सबको मिलाकर के पॉपुलेशन कहते हैं. सेम काइंड ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन. Sure. Next one in population. Population growth rate. Population growth rate. Population growth rate depend on percentage change between number of individual in a population at two different times. At two different times.
सपोज इट, जैसे अभी 100 पीपल्स आर गेट टुगेदर, तो पॉपुलेशन मीन्स है कि 100 पीपल है इन दिस हॉल, ठीक है। अब सपोज करो 110 हो गया, तो कितना परसेंटेज ग्रोथ हो गया? 10% ग्रोथ हो गया। हम पॉपुलेशन को ऐसे काउंट करते हैं, बट ये आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को मेंशन रखेंगे, पॉपुलेशन इज व्हाट? सेम काइंड ऑफ स्पेसिस, ठीक है। सो परसेंटेज रेट बिटवीन नंबर मींस इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइम्स। अब आज सपोज करो, आज क्लास है हमारी 20 जो है 6। चलिए एक और, आप लोग इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो 26 से मेरे को अभी याद आया, 26 जो डेट है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? 26 डेट है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? Why 26 is important for environment और इकोलॉजी? आपका एक सब्जेक्ट है डिजास्टर। एक डिजास्टर हुआ था 26 ऑफ अप्रैल 1986, चेरनोबिल अटैक। आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं कि चेरनोबिल अटैक क्यों हुआ था। एक बार एक दिन ऐसा आएगा मैं स्पेशल क्लास में आप लोगों को चेरनोबिल पढ़ा दूं, बिकॉज एक डिजास्टर है, डिजास्टर इज ऑल्सो सब पार्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। अर्थक्वेक, साइक्लोन, है ना। आप लोग का बायोलॉजी चल रहा है? बायोलॉजी नहीं चल रहा। बायोलॉजी के साथ साथ ये सारी चीजें आप लोग को रिलेट कर लेंगे, ठीक है सर। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो 26 ऑफ अप्रैल हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे सपोज आज 26 है, हम बात कर रहे हैं कि 28 को, भाई एक टाइम था 26 का, एक टाइम है 28 का। 26 से 28 हमारी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन दिस क्लास वो 11100 से कितना हो गया? 110 हो गया। मींस टोटल ग्रोथ कितना हुआ? टोटल परसेंटेज जो है पॉपुलेशन परसेंटेज कितना आया? 10% आया। अलग अलग टाइम पर, ध्यान से समझे, अलग डिफर टाइम पर पॉपुलेशन को काउंट करना, दैट इज पॉपुलेशन परसेंटेज। और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज उसको मेजर कर देना। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज पॉपुलेशन रेट। दिस इज पॉपुलेशन रेट। नेक्स्ट 10, नेक्स्ट पॉइंट, 10 कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। 10 कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। भाई ये परसेंटेज रेट, अब ऐसा सपोज इट कि 26 है आज और हम 28 को देख रहे हैं। 100 स्टूडेंट था, अब सपोज करो 90 रह गया, तो 10% का क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, डिक्रीज हो गया। 110 हो गया, दैट मींस 10% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो वी कैन से दैट द पॉपुलेशन रेट नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव बोथ। राइट डाउन नेक्स्ट पार्ट। Population growth depend upon birth rate, death rate, oblique में comma या oblique, death rate and migrations. चलिए हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। माइग्रेशन, डेथ रेट एंड बर्थ रेट, ठीक है। माइग्रेशन, डेथ रेट एंड बर्थ, ठीक है। अब सपोज इट आपकी क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है।
और अब जैसे सर है वहां बैठे, अब सर वहां से अपनी पोजीशन चेंज कर ले यहां, तो सर ने क्या किया, अपना माइग्रेट कर लिया अपने आप को, तो क्या नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर इफेक्ट हुआ? तो माइग्रेशन मीन यहां इक्वल रहेगा पॉपुलेशन, इक्वल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, इक्वल पॉपुलेशन। और डेथ रेट मींस यहां क्या होगा? अब डेथ रेट अगर इंक्रीज हो गया, दैट मींस भाई 100 पीपल थे, अब 90 रह गए, तो 10% क्या हुआ? वी कैन से दैट नेगेटिव ग्रोथ। यस और नो? दिस इज नेगेटिव ग्रोथ। और बर्थ रेट अगर इंक्रीज हो गया तो देन, अब 100 पीपल थे in our village, now present in 110, so we can say that 10%, that is positive growth. So thus can be negative as well as positive. Understand? माइग्रेशन में इक्वल रहेगा, कंट्री लेवल की नहीं, कंट्री लेवल की यहां बातें नहीं कर रहे, सेम काइंड ऑफ स्पीसीज की बात कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। माइग्रेशन से तो चेंज है ही नहीं। अब रशियन कुछ पीपल है वो इंडिया में आकर के रहने लग जाए, या इंडियन पीपल है कोई कनाडा में जाकर के रहने लग जाए, तो टोटल जो ग्रोथ है ऑल ओवर वर्ल्ड वो तो सिमिलर है ना, वो माइग्रेशन हो गया उनका। नेक्स्ट वन, सो देखो, अब यहां देखिए, देखो इंक्रीज हो जाना दैट इज नेचुरल पार्ट, माइग्रेट हो जाना ऑल्सो अ नेचुरल पार्ट, बट डेथ रेट इंक्रीज हो जाना दैट इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। बट डेथ रेट इंक्रीज हो गई, जैसे वल्चर, एक कंजर्वेशन प्रोग्राम चलता है इंडिया में, है ना, उसको हरियाणा से स्टार्ट किया गया। भाई वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी यूज्ड, भाई बिकॉज हम लोगों ने ये चेक किया जो वल्चर पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे स्लो डाउन, ऐसा प्रोसीजर आया कि उनकी नंबरिंग जो है वो बहुत डिक्रीज हो रही थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट आया। तो हम लोगों ने प्लान किया कि वल्चर कंजर्वेशन के लिए क्या किया जाए। अब वल्चर कंजर्वेशन डिक्रीज क्यों हुआ, वल्चर डिक्रीज क्यों हुए? क्योंकि आज हम जो कैटल हैं उनका फूड इस तरह का हो गया कि उनकी पहले क्या होता था, उनकी जैसे डेथ हो गई, उनको हम क्या करते थे, ऐसे ही किसी, आप लोगों ने गांव में पर्टिकुलर देखा होगा कि उसको ऐसे ही हम लोग फेंक देते थे, वल्चर उनको खाते थे। आज क्या कर रहे हैं, हम उसको दबा दे रहे हैं। अब वल्चर को फूड मिलेगा नहीं तो क्या होगा, वल्चर धीरे धीरे एक्सटेंट कैटेगरी के अंदर आ गए। ठीक है सर, तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ दैट। तो कंजर्वेशन कोई भी प्लान किया जाता है, कंजर्वेशन प्लान का मीन है यही कि कोई भी कंजर्वेशन प्लान किया गया। ठीक है सर, सो समथिंग आर डिफरेंट देयर। सो राइट डाउन लिमिटिंग फैक्टर, राइट डाउन new heading in population, limiting factor, resources, write down resources that limiting growth, abundance or distribution of organism, the distribution of organism is abundance or distribution of organism. The main limiting factor for growth of a population are abiotic or biotic components.
अब लिमिटिंग फैक्टर से डायरेक्ट इफेक्ट किस पर होगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? अब रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर होगा, या तो डेंसिटी इंक्रीज होगी या डेंसिटी डिक्रीज होगी. सो राइट डाउन अ न्यू heading, population density. What will be the effect of population density? Write down population density. It is the relation between it is the relation between of individual of a population and the area occupied these concepts are area occupied. These concepts are essential. These concepts are essential to ecology and environment policy making. Now suppose it, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो भी गवर्नमेंट को कोई ना कोई पॉलिसी सर्वाइवल कंडीशन के लिए देनी पड़ेगी. आप ह्यूमन की बात करो, आप किसी अदर पर्सन की बात करो, आप किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बात करो, हर एक के लिए पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए आप सपोज इट, जैसे प्रेजेंट टाइम के अंदर आई थिंक 3000 और समथिंग टाइगर्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, है ना, और पूरे वर्ल्ड के अंदर 4000 प्लस है, 4500, और उसमें सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ही मिलते हैं. सो इंडिया जो है इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर टाइगर कंजर्वेशन. और इंडिया में आप लोग देखें, अभी 2018 के अंदर डाटा आया था, अभी 2022 में डाटा आया, और हर 4 साल में इसका डाटा आता है, 2026 में डाटा आएगा, ठीक है. एग्जैक्ट जो टाइगर है वो जो टाइगर कंजर्वेशन है वो इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं. आप लोग 72 के अंदर टाइगर कंजर्वेशन एक्ट इंडिया के अंदर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में आता है, और हम लोगों ने टाइगर कंजर्वेशन स्टार्ट किया. और टाइगर कंजर्वेशन में पलामू झारखंड से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने इस चीज को फॉलो अप किया, और जो जिम कॉर्बेट है उसको भी उसी टाइम हम लोगों ने टाइगर जो है कंजर्वेशन के अंदर हम लोगों ने रखा था. ये सारी चीजें मैं आपको मेंशन कराऊंगा जब टाइगर कंजर्वेशन में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है. अब यहां समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं. अब एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, जैसे मान लीजिए डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. अब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो वहां के जो रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट होगा. जैसे अभी आज एक पर्टिकुलर पार्ट है इंडिया के अंदर, इंडियन मार्केट ब्यूरो है, आईएमबी डिसाइड कि एक मेल को कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है पर डे, फीमेल को कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है पर डे, और एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना. एक मेल को 55 ग्राम, एक फीमेल के लिए फॉर अ फीमेल 45 ग्राम, और एक प्रेग्नेंट लेडी उसके लिए 71 ग्राम प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड. अब क्या होगा, जैसे जैसे सपोज इट पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये ग्राफ आपको क्या होगा, इसकी पॉलिसी अलग आएगी, आईएमबी एक अलग पॉलिसी उसको शो करेगा, और वो धीरे धीरे ये जो ग्राम परसेंटेज है ये धीरे धीरे कम. तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है, पॉपुलेशन पर डिपेंड कर रहा है. पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होने से, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होने से यहां पर इन पर इफेक्ट होगा. तो अलग अलग जो पॉलिसीज फैक्टर हैं, क्योंकि आप लोग जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, यूपीएससी एक चीज देखता है, यूपीएससी आपको कोई उस फील्ड का मास्टर नहीं बनाना चाह रहा है, लेकिन आपके लिए आपकी लाइफ में उन चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए
कि यूपीएससी आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो पूछना चाह रहा है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ब्रेन में, आपके पास इकोनॉमिकल जो है सोशियोलिकल या सोसाइटी से रिलेटेड, वो आपके पास होना चाहिए सब कुछ। तो पॉपुलेशन डेंसिटी पर कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकिंग जो फॉर्मेशन है थ्रू आउट ऑफ यू कैन से दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कम्युनिटी। सर दिस इज पॉपुलेशन, नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी। community. We can say that the population and individual do not exist by themselves. You know, the population, और अगर आप लोग किसी कम्युनिटी से कनेक्ट नहीं है, अब सपोज इट कि आप लोग यहां क्लास में सिर्फ अकेले बैठे, आपके सामने कोई टीचर भी नहीं है, आप सिर्फ अकेले, तो क्या आप लोग इसी मूड से पढ़ पाएंगे जिस मूड से काम कर रहे हैं? तो पॉपुलेशन हो या एक इंडिविजुअल हो, उसका जब तक एक ग्रुपिज्म नहीं है, जब तक उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और ग्रुपिज्म इज कॉल्ड कम्युनिटी। जिस फोकस के लिए हम काम कर रहे हैं, अब सपोज इट आपको यूपीएससी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोगों को पढ़ाया जा रहा हो अब यहां पर नीट या जेई, तो आप लोग का क्या यहां फायदा होगा बैठने का, है ना? अच्छा, एक चीज और मैं आपको छोटा सा डिस्टर्ब करूंगा, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें और आप लोग भी ध्यान रखें। आपको एटीट्यूड में आना पड़ेगा, जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एटीट्यूड में आपको आना पड़ेगा। जब एक कोई हीरो एक शराबी का रोल करता है ना मूवी में, तो वो ये नहीं है कि वो शराब पीकर रोल करता है, वो पहले उसकी प्रैक्टिस करता है। तो सर ये प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की, और यहीं अगर मान लीजिए हम ऐसे मूड से बैठे कि ठीक है हमें बस टाइम निकालना है, आप अभी तक उस एटीट्यूड में नहीं आए हैं, हमें उस एटीट्यूड में आना पड़ेगा, एक ऑफिसर के एटीट्यूड में आना पड़ेगा। और जब तक उस एटीट्यूड को नहीं जिएंगे, क्लास में बैठने का कोई बेनिफिट नहीं। आप उस एटीट्यूड में आए, आप लोगों को लगना चाहिए कि हाँ हम क्लास में बैठे हैं, आप लोगों को लगना चाहिए आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी इंसान बना देती है, याद रखिएगा। एटीट्यूड हमारे अंदर आना चाहिए इस बात का कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है। ठीक है सर, ये मुरझाए हुए चेहरे नहीं, मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं ये मुरझाए हुए चेहरे नहीं, क्लास में स्माइली फेस होना चाहिए। दिस इज द क्लासरूम, कोई आईसीयू वार्ड नहीं है कि जहां सब सीरियस लोग मिलते हैं। ठीक है, क्लास में हमें बैठना है, क्लास में क्लास के तरीके से हमें डिस्कस करना है। जो भी कोई पॉइंट है डायरेक्ट टीचर से डिस्कस कर रहे हैं, हम ही कुछ सोच रहे हैं, हम ही कुछ सोच रहे हैं, चल रहा है दिमाग में कुछ ना कुछ। आप एक बात समझें, ये जो ब्रेन है ना, इसको जितना रेस्ट दोगे ये उतना स्लो होता चला जाएगा। इससे काम लो। We have 79 organs in our body. 78 सर्टिफाइड है कंप्लीटली बाय WHO, और 2017 में जो नया ऑर्गन भी WHO ने बताया है, अब उसके बारे में WHO रिसर्च कर रहा है। तो जो 78 ऑर्गन गॉड गिफ्टेड हैं उनसे फंक्शन कराओ। नहीं तो बोलते हैं ना कि बंद पुर्जों में जंग लग जाता है।
क्लास में एक बिहेव, एक माहौल, एक क्लास के अंदर क्रिएशन ऐसा होना चाहिए आप लोगों का, आप लोग को लगे कि हाँ हम क्लास में बैठे। आप सबके साथ ऐसा होना चाहिए। जो लोग लाइव बैठे हैं वो भी, लाइव लोग देखते हैं टीचर को, एक तो बहुत बड़े इंस्पायर्ड होते हैं वो लोग, और हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलता है कि वो सिर्फ मोबाइल में टीचर को पढ़ लेते हैं। मोबाइल में टीचर को पढ़ना एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, लेकिन है ना वो लोग फ्री भी हैं। कोई आराम से बेड पर लेट के पढ़ रहा है, कोई आराम से कुछ खा रहा है साथ साथ। डिसिप्लिन सिखाता है यूपीएससी, और ये जर्नी उस दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से हम यूपीएससी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपकी जर्नी तो स्टार्ट हो ही गई। आप ये ना समझे कि ये ना फील करें कि हमारी जर्नी उस दिन कंप्लीट होगी या उस दिन स्टार्ट होगी जिस दिन हम आईएएस सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपकी जर्नी क्लास में बैठे हो, जर्नी तो स्टार्ट हो ही गई है, तो इस जर्नी को एंजॉय करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इश्यू आए, डायरेक्ट आप टीचर से कांटेक्ट करो। यही तो फायदा है क्लास में बैठने का। ठीक है, आपको यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन आस्क फ्रीली, यू कैन आस्क। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी। राइट डाउन population and individual do not exist by themselves, do not exist by themselves. One species, next point, one species depend upon, Radhe Shyam, one species depend upon individual of different species with which they actively interact. They actively interact. डिफर काइंड ऑफ स्पीसीज या इंडिविजुअल या पॉपुलेशन। अब देखिए, यहां हम नंबर ऑफ पीपल काउंट करें, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ह्यूमन काउंट करें, तो आपकी भी काउंटिंग होगी और मेरी भी होगी, बट वी आर एक्टिवली इंटरेक्ट विद ईच अदर। मैं यहां कुछ बता रहा हूं, आप यहां सीखने के मूड से बैठे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, दोनों एक दूसरे से एक्टिवली इंटरेक्ट कर रहे हैं। दैट इज कम्युनिटी, दैट इज कम्युनिटी। अंडरस्टैंड? राइट डाउन नेक्स्ट वन। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल नीड्स प्लांट, एनिमल नीड्स प्लांट फॉर फूड एंड ट्री फॉर शेल्टर। एंड ट्री फॉर शेल्टर। ठीक है, अब दोनों इसी पर डिपेंड करते हैं। भाई ट्री किस बात पर, ट्री से ट्री को कभी खाते हुए देखा है? ट्री किसके लिए यूज हो रहा है? शेल्टर के लिए। आप लोग अपने घर में डिफर काइंड ऑफ जो वुडन वर्क आप लोगों के घर में है ना, और प्लांट को क्या करते हैं हम? हीटिंग प्रोसेस में लेते हैं, तो डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, राइट डाउन, यानी सेम स्पीसीज का फंक्शन अलग अलग हो गया, सेम स्पीसीज का फंक्शन अलग हो गया, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लांट्स नीड एनिमल्स फॉर pollination and seed dispersal अब जैसे प्लांट का यूज हम कर रहे हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, वो हम खाने में यूज कर रहे हैं, बट किसी ट्री है, जैसे ट्री का यूज कैसे कर रहे हैं हम? किसी वुडन वर्क के लिए कर रहे हैं, तो ये हो गया। बट प्लांट भी हमारा यूज कर रहे हैं, वो कैसे? हाउ? दैट इज द पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? यू नो, ट्रांसफर ऑफ
pollen grains. This is stigma, this is style, this is ovary. This is the part of female reproductive system in flower. Female reproductive system in flower. This is, ठीक है. अब इन फ्लावर एक सिस्टम ये भी है. This is anther. This is filament. A very light particle, these are pollen. Same as male secretes sperm as it is. This is the part of in which यानी male reproductive system in which anther and filaments and pollen grain are present. Pollen grain are present. This is male reproductive part. अब pollen grain secrete हो रहे हैं. अब pollen grain through air भी stigma तक जा सकते हैं. They can move through air also. और same situation जो bee है, bee, butterfly, इनके थ्रू भी तो they can move, है ना? Yes or no? तो अब क्या है, प्लांट किस पर डिपेंड है? एनिमल पर डिपेंड है. एनिमल किस पर डिपेंड है? प्लांट पर. तो दे आर different kind of species. Plant are a separate species and human are separate species. या animal are separate species. अब but they depend with each other, actively interact with each other. This is called community. This is called community. Next one, write down. A community, community is named after. A community is named after. Is named after the dominant plant form. Plant formed. Example, grassland community, grassland community, grassland community. But may have one of several may have several other species like bird, may have several other species like bird, trees, bird, like bird, trees, etc. A community is, next point, a community is not fixed or rigid, not fixed
और रिजिड, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, आज आप किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड कर रहे हो, कल अदर प्लांट पर डिपेंड करोगे। ठीक है, आज बटरफ्लाई पर डिपेंड कर रहे हैं प्लांट, मे बी वो किसी बी पर डिपेंड करें, मे बी किसी अदर इंसेक्ट पर डिपेंड करें। ठीक है, तो कम्युनिटी इज नॉट फिक्स और रिजिड। दे मे बी लार्ज और स्मॉल, दे मे बी लार्ज और स्मॉल। So we can say that community as a concept is very loose. Community as a concept is very loose and open-ended and open-ended. And open-ended means we can say that community divide into two parts, मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। हम लोगों ने क्या देखा कि कोई उसका लार्ज पार्ट नहीं, कोई स्मॉल भी, मे बी स्मॉल और मे बी लार्ज, और कोई ऐसा फ्रिक्वेंटली ऐसा पार्ट नहीं कि डिपेंड विद ईच अदर, मे बी वो चेंज हो जाए क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, कोई रिजिड नहीं है ना। सो राइट डाउन टू टाइप ऑफ कम्युनिटीज, community. There are two types: major community firstly major community, then minor community. Major community and minor community. Write down. Major community have large size, comma, well organized, large size, comma, well organized, and relatively independent, ठीक है। अब सपोज इट, जैसे प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल एंड एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट। अब यहां तक तो ठीक है, बट अभी भी उनको एक एनर्जी बाहर से मिल रही है, आउटसाइड एक एनर्जी उनको मिल रही है। कौन सी एनर्जी? सनलाइट। राइट डाउन, वेरी गुड। डिपेंड ओनली ऑन sun's energy, depend only independently के बाद लिखें नेक्स्ट पॉइंट से, डिपेंड ओनली ऑन sun's energy from outside and independent on inputs and output from adjacent communities. Example, savannas in Africa and tropical evergreen in northeast India, and tropical
एवरग्रीन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब हमारे यहां प्लांट की कैटेगरी कम्युनिटी अलग है, ठीक है, बट दोनों डिपेंड किसके ऊपर है? सन लाइट पर डिपेंड। आंसर। नेक्स्ट वन इज माइनर कम्युनिटी। नेक्स्ट वन इज माइनर community. Right now, dependent on neighboring community, depending on neighboring community for nutrients, and energy. Are often called societies. We are depend on societies, है ना? They are secondary aggregation. They are secondary aggregation within a major community. They are secondary aggregation. Meaning of aggregation I will explain. Aggregation within a major community, thus not completely independent. Meaning of aggregation is combination, joined together, combined together. Okay. Example, thus not completely independent. Thus not completely independent. Example, a pond in the African savannas. African savanna. The pond, लिखे a pond, P-O-N-D, pond. In the African savannas. In the African savannas. So, next point in community. Community is the combination of population of different species. Community is the combination of population of different species ठीक है। एक सिंपल से वर्ड में हमारे सामने क्लियर हो गया कि जितना भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज है कंबाइंड ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। ठीक है, कुछ डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कुछ डायरेक्टली इंडिपेंडेंट है। जैसे जो मेजर कम्युनिटी है वो इंडिपेंडेंट है। नॉर्थ ईस्ट, वहां जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो जो सवाना है इन अफ्रीका, उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं, बट बोथ आर डिपेंड ऑन आउटर पार्ट, आउटर एनर्जी, दैट इज सन्स एनर्जी। वो दोनों उस पर डिपेंड है। ठीक है, एनिमल्स किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है। प्लांट्स किस पर डिपेंड है? एनिमल्स पर डिपेंड है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड। Next one is ecosystem. That is the most important part. Ecosystem.
ecosystem. Write down a structural and functional unit of biosphere. Of biosphere. Structural and functional unit of biosphere. You know biosphere? Lithosphere, atmosphere or hydrosphere. This is biosphere. Or the basic unit of biosphere is called ecosystem. Basic unit of biosphere is called ecosystem. That consists, write down, that consists of interacting, that consists of interacting, that consists of interacting community of living beings, community of living beings and their environment. They are interact with each other. They are interact with each other and their environment and their human beings and their environment. Next point, it differs from environment. It differs from environment as environment does not include the nature of interaction, and relationship shared by organism, communities, and their environment. Means community, organism, environment, सब कुछ एक relationship between them. That is called ecosystem. Write down ecosystem. Next point. Ecosystem very greatly in size, very greatly in size and elements. Greatly in size and elements. So it can be as small. It can be as small as a single tree, or as a entire large forest, or as a entire large forest. भैया एक बात देखिए सर, भाई एक सिंगल प्लांट का भी तो इकोसिस्टम है और एक फॉरेस्ट का भी, तो इकोसिस्टम तो सबका हो सकता है, आपका भी हो सकता है, हम सबका एक साथ भी हो सकता है. ठीक है, दिस इज इकोसिस्टम. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट, हाई डिपेंडेंस is the feature of ecosystem. High dependence is the feature of ecosystem. If one part of high dependence of ecosystem
high dependence is the feature of ecosystem. If one part of ecosystem is damaged, one part of ecosystem is damaged, it impact everything else. It impact everything else. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और टुडेज टॉपिक, दैट इज इकोसिस्टम। या मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, है ना। तो इकोसिस्टम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट लिसन केयरफुली। देखो कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए, उसका इंपैक्ट वो सब पर होगा, ठीक है। मैं बचपन से साइंस स्टूडेंट रहा हूं और मैंने साइंस को फील किया है, पढ़ा नहीं है, मैंने फील किया साइंस को। वैसे कम्युनिटी अलग अलग रिलीजन को मानती है, सबके अलग अलग भगवान है, किसी का कोई भगवान है, किसी का कोई भगवान है, बट साइंस का भी एक भगवान है। साइंस इसको भगवान कह रही है, दैट इज भगवान। हाँ, बट नाउ भ फॉर भूमि, ग फॉर गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर, दैट इज भगवान। डिपेंड ऑन ईच अदर, वी डिपेंड ऑन भगवान। अब इसमें से एक को रिमूव करो, ना भगवान होगा ना हम होंगे। एक को रिमूव करो, ना तो कंप्लीट भगवान बनेगा और ना हम लोग एग्जिस्ट करेंगे। वी आर डिपेंड ऑन ईच अदर, दैट इज इकोसिस्टम। देन तो कोई भी आप ऐसा पार्ट ले सकते हैं, वी आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। प्लांट डिपेंड ऑन ह्यूमन एंड ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट। अब ह्यूमन जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट जनरेट ऑक्सीजन, depend with each other, depend on each other, we can say that. So now I'll explain type of ecosystem. Type of ecosystem. The first type, terrestrial ecosystem and grassland ecosystem. Terrestrial ecosystem and grassland ecosystem. Terrestrial ecosystem and grassland ecosystem I'll explain in next lecture, या next to next lecture. Completely I'll explain. Okay. Now only we know about there are two type of ecosystem, terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. मैं इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दूं तो terrestrial ecosystem means आप और हम, aquatic ecosystem means marine organism, that is aquatic ecosystem. So next term of in case of ecosystem, that is write down, sorry, hemostatus, बस इतना ही लिखना है। terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Write down status, homeostatus, we can say that, homeostatus. That phenomenon, what is homeostatus? That phenomenon of ecosystem maintaining, that phenomenon of ecosystem maintaining
their state of equilibrium, their state of equilibrium. Okay, no issue, write down. Write down in starting. The phenomenon of ecosystem, the phenomenon of ecosystem maintaining after, या maintaining their state of equilibrium, state of equilibrium, state of equilibrium, and regulating their on species structure, on spacing structure, and functional processes, their own species structure and functional process. ठीक है सर? We can say that every species have different kind of structure. Means we, means animals, means plant, all are living species, but every species have different kind of structure, but depend on अब ऑक्सीजन, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और एक एनिमल भी, और प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, plant take carbon dioxide, every different kind of plant have similar जो functioning, similar functioning. भाई आपके घर कोई एक प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कोई फॉरेस्ट प्लांट है वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, एवरग्रीन प्लांट है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है. उनका स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट हो बट उनका जो फंक्शन है वो एनवायरमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग सिमिलर. यस और नो? That is called homeostasis. That is called homeostasis. Homeostasis means similar kind of work, similar kind of function, and similar kind of function. Write down. Every ecosystem has this feature. Every ecosystem has this feature. Every ecosystem has this feature. Now components of, now new heading, components of ecosystem. Components of ecosystem. We can say that component of ecosystem there are two components, biotic or abiotic, means non-living and living. There are part of ecosystem. Then firstly abiotic, inorganic or living, non-living parts. Firstly abiotic determines and how, determines how and where an organism, determines how and where an organism exists in its environment, exists in its environment. So firstly we will discuss about energy. Energy is a abiotic component of ecosystem. Write down. Sun's energy is essential. Sun's energy is essential to maintain, for maintenance
of the life, for maintenance of the life, for maintenance of the life, plants use sunlight directly, plants use sunlight directly for photosynthesis, and create biomes, and create biomes. These biomes act as, what is biomes? Write down. These biomes act as energy source for animals. These biomes act as energy source for animals, who cannot use sun directly, who cannot use sun directly. Energy determines distribution of organism in the environment, See it. एक प्लांट है सर, दिस इज द प्लांट या ट्री, दिस इज सन, दिस इज सनलाइट, ठीक है सर, एंड प्लांट डू फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट क्या कर रहे हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, and absorb water from soil, carbon dioxide and water combined with each other with the presence of sunlight, they form C6H12O6. This is the glucose, yeah, we can say that energy of plant, and O2. Any plant release O2, plant release O2, yes or no? Same situation we are standing here, we take oxygen, human inhale oxygen and exhale CO2, same situation, CO2 and देखो
अब ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन जनरेट किससे हुआ? प्लांट। अब प्लांट से कैसे हुआ? सनलाइट की प्रेजेंस से। यानी सनलाइट को डायरेक्ट यूज किया प्लांट, और इनडायरेक्ट यूज कर रहे हैं कौन? हम और आप। यस और नो? ठीक है, तो एनर्जी ऐसा नहीं हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, नहीं, हम इनडायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी को। भाई आपका क्वेश्चन सबसे अच्छा ये होना है कि सर देखिए, प्लांट तो डिपेंड कर रहे हैं सनलाइट पर, हम कैसे कर रहे हैं? हम भी कर रहे हैं। यह आपके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन है। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट। यस और नो? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट वन नोट करेंगे। नोट डाउन। इफ यू वांट टू नोट डाउन, we are depending on each other. Plant depend, we are using energy directly or indirectly also. Sometimes we use direct and sometimes we use indirectly. Direct food. Direct food. So next one is, next abiotic factor. Abiotic factor. First abiotic factor, that is energy. Second abiotic factor, that is rainfall. 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 Write down. Majority of biochemical reactions, majority of biochemical reaction take place in water's presence, take place in water's presence. Majority of biochemical reactions take place in water's presence. वाटर स्ट्रेंथ। आप लोग चेक करें, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो वाटर की प्रेजेंस में होती हैं। देयर आर मेनी काइंड ऑफ रिएक्शंस। हमारी बॉडी में ही देख लीजिए, अगर आप लोग पानी नहीं ले रहे हैं, वाटर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, तो आपका जो ये बकल कैविटी है, देयर आर सम ब्रिस्टल्स इन बकल कैविटी, देयर आर सम अल्सर्स इन बकल कैविटी, है ना। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा B3 की कमी हो गई, विटामिन B3 की कमी। तो आफ्टर सम टाइम, अब जैसे सर को टेंशन हो गई है ना, इंस्टेंट एक्शन। नहीं, वैसे भी पानी, आप वाटर जो है आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि भाई वैसा ही बच्चा, लेकिन वाटर की रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर होनी भी चाहिए। ठीक है, तो पर डे आपका एक क्राइटेरिया है कि आप मिनिमम वाटर इतना लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज, वी कैन से दैट वाटर
water regulate human body temperature also? Yes or no? Write down. Write down. Water help to regulate. Water help to regulate. Water help to regulate body temperature. Body temperature also. Further, water bodies form habitat for many aquatic plants and animals. देखो एक चीज वी नो वेरी वेल, हैवी रेनफॉल बायोडाइवर्सिटी आर फ्यू. ऐसा थोड़ी कि आपके यहां भी हैवी रेन होता है. जैसे डेजर्ट अलग पार्ट हो गया, इक्वेटर अलग पार्ट हो गया, पोलर रीजन टुंड्रा अलग पार्ट हो गया. देयर आर different kind of parts. So we can say that heavy rainfall biodiversity are few in the world. Yes or no? So next point is area with heaviest rainfall. Area with heaviest rainfall have few of the highest biodiversity in the world. Few of the highest biodiversity in the world. Highest biodiversity in the world. तो रेनफॉल डिपेंड तो कर रहा है बायोडाइवर्सिटी पर, इकोसिस्टम पर, या विद ईच अदर, है ना. बट हर जगह तो नहीं है. अब डेजर्ट में तो नहीं है रेनफॉल. अब वहां की जो इकोसिस्टम है वो भी कंडीशनली सर्वाइवल तो कर रहा है ना. तो बायोडाइवर्सिटी अबायोटिक कंपोनेंट्स तो है, बट सबके लिए नहीं है रेनफॉल. थर्ड वन इज टेम्परेचर. Temperature is a critical factor that greatly influence survival of organism. देखिए टेम्परेचर का रोल बहुत बड़ा है सर. आप लोग जानते हैं जो वीनस है, वीनस प्लेनेट जो सनलाइट के साइड है, उसका टेम्परेचर +400 डिग्री सेल्सियस, और जो बैक साइड ऑफ सनलाइट है उसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस. ये सर्वाइवल कंडीशन ही नहीं है. अब अर्थ पर सर्वाइवल कंडीशन कैसे है? बिकॉज अर्थ इज अ हैबिटेट प्लेनेट, और सेम इस हैबिटेट प्लेनेट में कौन आ रहा है? मार्स. तो हमारे सोलर सिस्टम में तभी तो दो के ऊपर डिपेंड है, अर्थ और मार्स. अब मार्स पर भी आफ्टर बिलियन ईयर सर्वाइवल तो होगा ही होगा, है ना. क्योंकि उसके कुछ कंपोनेंट्स, उसके कुछ पार्ट अभी उस पर रिसर्च चल रहा है. आफ्टर सम टाइम उसमें चेंज आएगा तो कुछ सर्वाइवल कंडीशंस मिलेंगी. बट सब सर्वाइवल कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? टेम्परेचर. अ क्रिटिकल फैक्टर है. अब टेम्परेचर ही कंट्रोल नहीं हुआ, दैट मीन्स आप लोग एक 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, यू नो क्या हुआ था यहां? हिरोशिमा और नागासाकी. हाँ, एक एटम बॉम्ब से टेम्परेचर क्रिएट हो गया
1000 degree Celsius temperature. A 4000 degree Celsius temperature means everyone become vapor, everyone become gaseous particle at that temperature. अब एक हाइड्रोजन बॉम्ब को, दिस इज एटॉमिक बॉम्ब, और एक हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्टिव होने के लिए ही टेम्परेचर इतना रिक्वायरमेंट है. So we can say that the hydrogen bomb is most dangerous for human या every organism, क्योंकि उसको तो इतने टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट है उसको एक्टिवेट होने के लिए, फॉर एक्टिवेशन. सो एक फॉर इन अ सर्वे एक्सपर्ट और साइंटिस्ट सेज दैट इस पूरी अर्थ को अगर डैमेज करना है ना, पूरी अर्थ को, तो ठीक पावर के 8 एटॉमिक बॉम्ब की रिक्वायरमेंट है. 8 एटॉमिक बॉम्ब होंगे तो पूरी अर्थ डैमेज हो जाएगी. बट 8 एटॉमिक बॉम्ब इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन बॉम्ब. इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन. ये सिमिलर पावर के होते हैं. और एक ठीक अच्छी पावर का मतलब एक लेवल हो जिसके अंदर टीएनटी का लेवल हो, फ्यूल का लेवल हो, जो ब्लास्टिंग जो एक्सप्लोजिव है उसका एक लेवल हो, मींस मिनिमम 30 to 40 टन यूरेनियम और 100 टन अराउंड टीएनटी हो, पूरा अर्थ जो है वो डैमेज हो जाएगा. इतना पावरफुल है ये. अर्थ का टेम्परेचर 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स तो मोस्टली कंट्री कर चुके हैं. इतना पावरफुल तो किसी के पास नहीं है, बट मोस्टली कंट्रीज के पास इसका छोटा पार्ट है. हम लोगों में क्या था 1998 परमाणु पोखरण राजस्थान, और 120 मोर देन 120 न्यूक्लियर बॉम्ब वो रशिया के पास है. अमेरिका के पास 100+ है, चाइना के पास 60+ है, इंडिया के पास 10+ है. हम कहां पीछे हैं? नहीं, आप जिनका नाम ले रहे हैं उनके पास कोई नहीं है ना, वो एटॉमिक बॉम्ब है. हम हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं, वो एटॉमिक बॉम्ब प्रेजेंट. हम लोग भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, बट हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोस्ट डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर इकोसिस्टम, यू कैन से दैट. तो इसका ये कोई अच्छी बात नहीं है कि भाई हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए, बट ये एक डेवलपमेंट के लिए, एक सर्वाइवल कंडीशंस के लिए ये सारी चीजें सेल्फ डिफेंस यू कैन से दैट, या सिक्योरिटी है ना, या डिफेंस, उसके लिए सारी चीजें रिक्वायरमेंट. ठीक है. सो टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर. You can say that organism can tolerate, write down, organism can tolerate only a certain range of temperature. We know very well, only a certain range of temperature and humidity. Again, organism can tolerate a certain range, a certain range of temperature and humidity. Example, high temperature areas like desert, have
low population of organism, low population of organism. Fourth component, that is atmosphere, that is atmosphere. सर एक बात फील करें, देखो वीनस, मरकरी, मार्स, मून, किसी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारे पास है, तो हम यहां डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, वो यहां सर्वाइवल है ना। अगर इस एटमॉस्फेयर को रिमूव कर दे तो क्या होगा? excreton also escape out. Very good. And every organism and every species will die. Yes or no? So again, sorry, next, that is the most important for, okay, atmosphere. The earth atmosphere is responsible. The earth atmosphere is responsible for creating conditions, suitable for the existence, of a healthy biosphere, suitable for the existence of a healthy biosphere on this planet. One of the component being carbon dioxide, CO2, carbon dioxide, which is necessary component in photosynthesis. Component of photosynthesis. So the most important part. Next component is, fifth component is substratum. Substratum, we can say that a soil, a cover of land, because a small microorganism are survive in inside land. You can say that crust. Very good. So next one is substratum. Substratum. Land is covered, write down, land is covered by soil. Land is covered by soil. And wide variety of microbes and wide variety of microbes and small animals thrive in it. There are many microbes found inside soil. Earthworm example. There are many type of microbes. Write down roots of plant. Next part,
नेक्स्ट पॉइंट, रूट्स ऑफ प्लांट, पियर्स, PIERCE, पियर्स through the soil, through the soil to absorb minerals and water, to absorb minerals and water. Nature of soil determines the nature of plants. Nature of soil determines the nature of plants that have higher potential, to grow in the area, We know very well भाई, नेचर ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉइल. अब डेजर्ट में कैसा प्लांट होगा, है ना? यस और नो? मरीन प्लांट कैसा होगा? हेलोफाइटा, क्या है ना? डेजर्ट विथ जीरोफाइटा, काइंड ऑफ जीरोफाइटा प्लांट, जिसको ड्रफनेस जिसके अंदर है, जस्ट लाइक कैक्टस, वो डिपेंड करेगा, यानी सॉइल पर डिपेंड कर रहा है किसका नेचर, प्लांट का नेचर. एंड एग्जांपल, ब्लैक कॉटन सॉइल इज गुड फॉर कॉटन क्रॉप्स. Black cotton soil is good for cotton crops. Next is there are many kind of materials. Next is materials. Next is materials. Materials, we can say that organic and inorganic also. Organic just like carbohydrate, fat, protein, minerals, and inorganic phosphorus, nitrogen, or zinc, iron, etc. So firstly, organic compounds like proteins, carbohydrates, lipids, humerus are found, humerus are found from inorganic compound on decomposition. Next point, inorganic compound like carbon dioxide, water, sulfur, nitrates, phosphate, and ions are essential for organism to survive. Example, जैसे फर्टाइल जो लैंड है उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना? जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा क्रॉप का. तो एग्जांपल,
areas with example, areas with better humus, areas with better humus are more fertile and witness higher biodiversity. So these are abiotic. Now biotic components. So biotic components, first biotic component, that is autotrophs. Write down autotrophs. Autotrophs, we can say that primary producer. Autotrophs, that is primary producer. Autotrophs. Who are primary producer? Plant. They can photosynthesis. So write down plant, a green plant plus certain bacteria and algae capable of photosynthesis. You know photosynthesis? Very good. Write down photosynthesis. A new heading, photosynthesis. Everyone know about the reaction of photosynthesis? Everyone? Write down photosynthesis. Synthesizing carbohydrate from simple inorganic materials. Synthesizing carbohydrate from simple inorganic materials, like carbon dioxide, and water in the presence of sunlight. This carbohydrate is indirectly transferred. To known producers, indirectly transferred to known producers. अब प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या फॉर्म हो रहा है? ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हम तक पहुंच रहा है. वी आर नॉन प्रोड्यूसर, बट हम उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, है ना. नेक्स्ट वन इज हेट्रोट्रॉप्स. This is autotrophs. Next one is heterotrophs. Heterotrophs या phagotrophs. Heterotrophs, you can say that the phagotrophs. We can say that consumer. So, who are heterotrophs या phagotrophs? Carnivores, herbivores, omnivores, dependent on other, that is heterotrophs. Write down. Incapable of
incapable of producing own food, incapable of producing own foods, divided into two parts. They divide into two parts. First one is macro consumers. Write down. First one is macro consumers. Macro consumers. Write down. Macro consumers. Write down. Feed on plant or animal or both. Feed on plant or animal or both. This is macro consumers. These are macro consumers. But which are depend on plant, that is called herbivores. Depend on animal, that is called carnivores. And dependent on both, omnivores. Or human are omnivores. Write down. First one is herbivores. Herbivores. Primary consumer like cow. Herbivore. Primary consumer like cow. Second, carnivore. Second, carnivore. Secondary consumer like wolves. Or tertiary consumer like lions. Omnivores. Third is omnivores. Omnivores, both herbivores and carnivores like human. Like human. These are my macro consumers. Next, micro consumers. Micro consumers. These are known as detrivores. Yes, sir. Detrivores. Feeders that decompose organic matter. Feeders that decompose organic matter by breaking them down in breaking down in smaller particles, through digestion. Feeders that decompose organic matters by breaking them down in smaller particles through digestion. Example, earthworm. So this is heterotrophs, yeah, phagotrophs, and third is saprotrophs.
saprotrophs means decomposer या osmotrophs. We can say that decomposer या osmotrophs. Decomposer oblique osmotrophs. They obtained energy and nutrients. They obtained energy and nutrients by fully decomposing dead organic substances externally, fully decomposing dead organic substances externally without digesting them. Saprotrophs, next point, saprotrophs use chemicals. Next point, saprotrophs used chemicals to decay the organic matters, which released simplified nutrients, is then consumed. Simplified nutrients which is then consumed by it. They do not digest organic matter directly. As simpler organism than detrivores. Just like example of streptotrophs, fungus. Write down fungi. These are depend on dead organism. And next one is biome. So this is ecosystem. For in next class, next to next class, we also further divide of ecosystem. We will discuss about that in next to next class. ठीक है, अब ये आपके सामने ये आता रहेगा कि इकोसिस्टम क्या है, ये स्ट्रेप्टोट्रॉप्स क्या है, हेट्रोट्रॉप्स क्या है, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ये नाम यूज होंगे, तो आपके ब्रेन में इमीडिएट आना चाहिए कि हम इसकी बात कर रहे हैं. दिस इज इकोसिस्टम. नेक्स्ट वन इज बायोम. राइट डाउन. नेक्स्ट वन इज बायोम. Next one is biome. Biome may be defined as a large natural ecosystem, where it is the total assemblage of plant and animal communities
next point, here all the biotics have maximum common characteristics and all the areas of biome, are characterized by more or less uniform environment conditions. अब इसको बड़ा सिंपल से वर्ड में लिखें, जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है दैट इज बायो, ओनली टेरेस्ट्रियल पार्ट, एक्वेटिक पार्ट नो बायो. देन राइट डाउन अ न्यू लाइन, terrestrial part of biosphere, there are no aquatic biome, there are no aquatic biomes, ओके. अब बायोम से आगे वैसे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मैं बायोम को मेरी पर्सनल फीलिंग है कि मैं बायोम को टुंड्रा, पोलर, है ना, पेरिए, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, इन सब को मैं आपके साथ डिस्कस करूं. तो इसके लिए अभी टाइम लगेगा और हमारा टाइम क्लास का हो चुका है. ठीक है, तो बायोम को बड़े अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बायोस्फीयर का अच्छे से डिस्कशन करेंगे. आप लोग और हम ये कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम का एक परफेक्ट नॉलेज हमें हो गया है. इकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक परफेक्ट नॉलेज हमें हो गया. देखो, पहले मैं डायरेक्ट अगर आप लोगों को अभी नेशनल पार्क पढ़ाना स्टार्ट कर देता, आपको बड़ा इंटरेस्ट आता, वाह सर. लेकिन यूपीएससी हमारे स्टैटिक पार्ट पर काम नहीं करती है. यूपीएससी बात करती है क्योंकि आप किसी भी एरिया के डीएम है तो आपको वहां का एनवायरमेंट आपके लिए मस्ट होगा. दैट्स व्हाई एनवायरमेंट और इकोलॉजी हमारा सिलेबस है. तो हमें इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना होगा और उसी समझने के पार्ट में कंटिन्यू करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों से अभी ये डिस्कशन किया है. इकोसिस्टम को मैंने अभी आपके सामने डिस्कशन किया. कुछ इकोसिस्टम था, कुछ बायोस्फीयर था, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स, और उसको फर्दर डिवाइड किया हम लोगों. ठीक है, सो दिस इज द क्लास और दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास. थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेट मी. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. और अगेन आप लोगों ने मेरे को झेला. हाँ, मेंस क्वेश्चन राइट डाउन, सॉरी, मेंस क्वेश्चन राइट डाउन. define behavioral या behavioral adaptation and describe the hibernation. 10 marks.
150 वर्ड्स। ठीक है सर। बिहेवियर एडेप्टेशन, इसको मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रख दिया है। कंप्लीट इकोसिस्टम, कंप्लीट जो पॉपुलेशन कम्युनिटी, ये सब एक्सप्लेन हो गया। देन सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर मेंस, और we will meet in next class same time 11 o'clock. So Jai Hind, Jai Bharat.